Hello children, hope you're all doing good. Let's start today's chapter, motion and time. Warm up. When we buy something like milk, vegetables, bread, butter, rice, clothes, etc., the shopkeeper measures the quantity and charges accordingly. Look at the following pictures and write the measurement unit under each picture. देखिए जब भी हम कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर हमेशा क्या करता है, क्वांटिटी को मेजर करता है एंड देन हमसे चार्ज करता है अकॉर्डिंगली. तो देखिए कुछ आपको पिक्चर्स दी गई हैं, आपको इनका मेजरमेंट यूनिट लिखना है. जैसे कि मिल्क को हम किस में मेजर करते हैं, राइट? Measurement of time in ancient times. Long ago, people did not have clocks or watches for measuring time, but people had realized the importance of time. Our ancestors used some natural events which repeated regularly after definite intervals of time to measure time. For example, the time taken between one sunrise to the next sunrise was called a day. The time taken between one new moon to the next moon was called a month. The time taken by the earth to year one complete revolution of the sun was called a year. Some of the important time measuring devices used in ancient times were sundial, sun clock and water clock. A sundial measures time by the position of the shadow cast by the sun at different times of a day. पहले एंशियंट टाइम में लोगों के पास क्लॉक्स या वॉचेस नहीं थे, बट उनको टाइम का इंपॉर्टेंस का रियलाइजेशन था, तो वो कुछ नेचुरल इवेंट्स का यूज़ करते थे. जैसे कि उन्हें पता था कि एक सनराइज से जो नेक्स्ट सनराइज के बीच का जो टाइम है ना, वो आपका दिन है, और एक न्यू मून से लेके जो नेक्स्ट न्यू मून आएगा वो मंथ है, और अर्थ जो एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में टाइम लेती है, दैट इज अ ईयर. तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस थे उनके पास, जैसे कि सन डायल, सन क्लॉक एंड वाटर क्लॉक. The sand clock uses a flow of sand from one glass bulb to another to measure time. A water clock uses the rate at which water drips from one vessel to another to measure time. तो sand clock में देखिए sand होती है जो drip होती है एक vessel से दूसरे vessel में, जिसमें time measure किया जाता है. And water clock में जो है water आपका जो होता है drip होता है एक vessel से दूसरे vessel में to measure time. Measurement of time. Time is the interval between two instances. Time is measured in terms of mean solar day. A solar day is the time taken by the Earth to complete one rotation about its own axis. The standard unit of measuring time is second and is written as small s. The larger units of times are minutes and hours, written as minute and hour. Some units and their conversions are as follows. देखिए टाइम आपका इंटरवल है दो इंस्टेंसेस के बीच में. टाइम का मतलब है, टाइम को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सोलर डे. सोलर डे का मतलब क्या होता है कि टाइम जो अर्थ ने लिया अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में. तो स्टैंडर्ड यूनिट होती है टाइम की सेकंड, ओके, और जो लार्जर यूनिट्स होती है उनको मिनट या आवर में नापा जाता है. तो देखिए कुछ यूनिट्स उनके कन्वर्जन है, जैसे 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, राइट. 1 आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं, 24 आवर से आपका बनता है 1 डे, राइट. तो ये देखिए सारे आपके यूनिट्स उनके कन्वर्जन हैं. Measuring devices. Clocks and watches are the most common time measuring devices used by us. The working of clocks and watches are rather complex, but all of them use the principle of periodic motion for measuring time. We have learned in previous class that a motion which repeats itself at regular intervals of time is called periodic motion. One of the most common devices which show periodic motion is the simple pendulum. तो क्लॉक्स एंड वॉचेस है जिसके थ्रू हम टाइम को मेजर करते हैं. तो जो वर्किंग है क्लॉक और वॉचेस की वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट ये सारे ही पीरियोडिक मोशन का जो प्रिंसिपल है उस पर वर्क करते हैं. जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम पढ़ के आए हैं कि जो आपका रिपीट हो रहा है मोशन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. और इसका एग्जाम्पल है आपका सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम. A simple pendulum consists of a small metal ball called bob suspended by a long thread from a rigid support such that the bob is free to swing back and forth. The motion of pendulum was first studied by Galileo. Now we define certain terms connected with the study of a simple pendulum. So here देखिए, this is the simple pendulum. इसमें आपका क्या होता है, एक बॉब, मेटल बॉल होती है जिसे कहा जाता है बॉब होती है, और ये बॉब है ये फ्रीली स्विंग करता है आपका बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो. Length of the pendulum. The length of the string thread from the point of suspension to the center of the bob is called the length of the pendulum. Mean position of the bob. The position of the bob when it is at rest is called its mean position. So देखिए this is the length of the string, तो इसे length of the pendulum कहा जाता है. एंड जब इस पोजीशन पे बॉब होता है तो वो आपका रेस्ट की पोजीशन होती है उसकी. Extreme positions of the bob. The position where the bob is at the maximum distance from the mean position are called the extreme positions. Oscillation of the pendulum. The motion of the bob of a pendulum from one extreme position to the other extreme position and back is called an oscillation of the pendulum.
एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या है कि वो पोजीशन जो बॉब जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पे है अपने मेन पोजीशन में, एंड जो मोशन है बॉब का किसी पेंडुलम का एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन एंड देन बैक, दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन. Amplitude of pendulum. As the pendulum oscillates to and fro, the maximum displacement of bob from its mean position on either side is called the amplitude of pendulum. Pendulum देखिए to and fro आपका oscillate होता है, तो जो maximum displacement हुआ है bob का उसके mean position से on either side, that is called the amplitude of pendulum. Time period of the pendulum. The time taken by the bob of a pendulum to complete one oscillation is called the time period of the pendulum. अब pendulum ने एक oscillation को complete करने में कितना time लिया है, that is the time period of the pendulum. Do you know what? Galileo Galilei, considered to be the father of modern science, invented the first reliable pendulum clock in the year 1583. He discovered escapement called Galileo's escapement, which controlled the clock movement and so improved its accuracy. गैलीलियो गैलीली जो है उनको मॉडर्न साइंस का फादर भी कहा जाता है. इन्होंने पेंडुलम को इन्वेंट किया था ईयर 1583 में, और उन्होंने डिस्कवर किया स्केपमेंट, जो कि जो क्लॉक का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता था, जिससे कि एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जा सकता था. Pendulum clock. The periodic motion of a pendulum is utilized in pendulum clocks for measuring time. The pendulum clocks are not used much because they are big and bulky, so they could not be carried everywhere easily. In order to make small, light and portable clocks and watches, a kind of modified pendulum called balance wheel and hairspring arrangement was developed. देखिए जो पीरियोडिक मोशन है पेंडुलम का उसको यूटिलाइज किया जाता है पेंडुलम क्लॉक्स में टाइम को मेजर करने के लिए. तो जो पेंडुलम क्लॉक्स हैं उनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि बहुत ही बिग और बल्की होते हैं, तो उनको हर जगह लेके नहीं जा सकते इजीली. तो इनको स्मॉल, लाइट और पोर्टेबल क्लॉक्स या वॉचेस करने के लिए एक मॉडिफाइड पेंडुलम को यूज़ किया गया, जिसे बोलते हैं बैलेंस व्हील या फिर हेयर स्प्रिंग अरेंजमेंट. अ बैलेंस व्हील कनेक्टेड टू अ हेयर स्प्रिंग शोज पीरियोडिक मोशन. तो एक बैलेंस्ड व्हील जो आपका कनेक्टेड हुआ हेयर स्प्रिंग के, वो पीरियोडिक मोशन को शो करता है. दीज आर कॉल्ड विंडिंग क्लॉक्स एंड वॉचेस बिकॉज दे आर रन बाय winding a special kind of a spring with the help of winding key. Even these watches and clocks are not used much these days. हालांकि इनको भी आजकल यूज नहीं किया जाता है. Estimation of time taken in common daily activities. We perform so many activities in our daily life, right from taking bath to watching our favorite programs on television. Different amounts of time are consumed in doing different activities. It generally happens that different people take different times for the same activity. For example, a student may take 10 minutes to take a bath, whereas another student may take 20 minutes to do the same thing. Moreover, urgency of work or shortage of time may lead some people to complete the job quickly. The table list shows the approximate timings for various activities. देखिए हम डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, नहाने से लेके अपना फेवरेट प्रोग्राम देखने तक टेलीविजन पे. तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में कंज्यूम होता है, राइट. अब जैसे कि एक स्टूडेंट को हो सकता है नहाने में 10 मिनट लगे, हो सकता है दूसरे स्टूडेंट को 20 मिनट्स लगे, इट डिपेंड्स. तो कई बार क्या होता है कि जैसे जो अर्जेंसी होती है वर्क की या हमारे पास शॉर्टेज होता है टाइम का, तो उसकी वजह से हम कोई भी टास्क जो है ना क्विकली कर लेते हैं. तो देखिए आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है और उनमें कितना कितना टाइम लगता है, अप्रॉक्सीमेट टाइम है, राइट. मोशन. We are surrounded by things which are either stationary or moving. For example, houses, mountains, electric poles, chairs, tables, and picture hangings on walls are found stationary. On the other hand, vehicles moving on a road, players on a football field, birds in the sky, soldiers in a march past, and falling raindrops are in motion. Farmers till the land by moving the plow through the soil. Even when you are sitting at one place, blood is moving through your arteries and veins. Air is flowing in and out of your nostrils and your heart is beating. Thus, moving things are an integral part of our life. All moving things are said to be in motion. हम बहुत सारी चीज़ों से सराउंडेड हैं. उनमें से कुछ स्टेशनरी होती हैं यानी रेस्ट की पोजीशन पे होती है, या कुछ मूव कर रही होती हैं. जैसे हाउसेस, माउंटेन्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, ये सारे क्या हैं, ये वॉल हैंगिंग है आपकी, वो ये सारे स्टेशनरी हैं. जबकि व्हीकल्स हैं, कोई प्लेयर है आपका फील्ड में, बर्ड्स हैं आपके स्काई में, शोल्डर जो मार्च पास कर रहे हैं, ये सभी आपके मोशन में, राइट. अब जैसे ब्लड हमारी जो आर्टरीज और वेन्स में मूव कर रहा है, नॉस्ट्रल से एयर जो हमारी फ्लो इन एंड आउट हो रही है, हमारा जो हार्ट बीट कर रहा है, तो देखिए सारे ही ये जो मूविंग थिंग्स हैं हमारे पार्ट, इंटीग्रल पार्ट है हमारे लाइफ के. तो जितने भी मूविंग थिंग्स हैं उन्हें कहा जाता है दैट दे आर इन मोशन. व्हाट इज मोशन? यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड that some objects around you are moving while others are not. For example, you may see a bird or an aeroplane flying across your house top.
द बर्ड और द एरोप्लेन इज मूविंग. अब देखिए बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास, कुछ मूव करते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, जैसे कि बर्ड फ्लाई कर रही है, एरोप्लेन, ये सारे आपके मोशन में. वी सी दैट द बर्ड or the aeroplane is in motion. The house top is not moving. We see that the house top is at rest. अब house top क्योंकि move नहीं कर रहा तो आपके rest पे है. Activity 1. Look at the objects around you. You may select some of the objects from the following list. Butterfly, dog, vulture, owl, cow, your hand, a small baby, a flag, tree leaves, air flower, a fish in water, a housetop, a factory, a lizard, a stone, a horse, a girl, a boy, a ball, a bat in a batsman's hand, fielder in a cricket field, a moving train, a swing machine, a wall clock, the moon and the sun. You might have observed that some of them are at rest while others are in motion. So what you have to do is कि आपको ये जो जितने भी objects हैं इनके नाम लिखने, जो rest पे हैं और जो motion पे उनके नाम लिखने, right? In the above activity, how did you decide whether an object is in motion or at rest? You might have noticed that the bird is not at the same place after some time, while the wall clock is at the same place. On the basis, you can decide whether an object is at rest or in motion. अच्छा देखिए, आप कैसे पता करेंगे वो मोशन में है और नहीं है? जैसे वॉल क्लॉक को आप देखेंगे वो सेम जगह पे रहेगी, राइट? तो दैट मीन्स वो रेस्ट पे है. लेकिन आपकी जो बर्ड है वो अब सेम प्लेस पे नहीं है, यानी कि वो मोशन में है. इसकी वजह से उसका जो प्लेस है वो चेंज हो रहा है. One has to be very careful while deciding whether an object is at rest or in motion. For example, the minute's hand or hour's hand in a clock may appear to be at rest to us in the first sight, but if we look at them after some time, they change their positions. We must therefore observe very carefully and for a sufficient time before concluding whether an object is at rest or in motion. In class 6, we have learned different types of motions like rectilinear motion, circular motion, rotational motion and periodic motion. देखिए जब आप ये डिसाइड करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है. जैसे कि मिनट्स हैंड एंड आवर्स हैंड आप देखेंगे आपको लगेगा कि रेस्ट पे क्योंकि मूव नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है. दैट मीन्स वो आपके मोशन में. तो आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस पढ़े थे क्लास 6 में, राइट? स्पीड. Objects may travel fast or slow. The most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distances moved by them in a unit time. Speed of a moving object is the distance traveled by it in unit time. If we know the distance covered by an object and the time taken by it to cover that particular distance, we can calculate the speed of the object by using the formula. Speed is equals to distance covered by time taken. देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट या स्लो ट्रैवल करता है तो मोस्ट कन्वीनियंट वे क्या है आपका कि हम किसी की स्पीड को फाइंड करें. उससे पता चलता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है आपका वो फास्ट मूव कर रहा है या फिर आपका स्लो मूव कर रहा है. तो स्पीड को हम कैसे निकालते हैं? देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट ऑफ स्पीड. इन एसआई यूनिट द स्पीड ऑफ in SI system the unit of speed is meter per second. If the distance covered is very small, then speed is expressed in centimeter per second. If the distance is very large, the speed is expressed in kilometer per hour. Average speed. Generally, the speed of vehicles such as cars, buses, scooters, etc. are non-uniform. They cover unequal distances in equal intervals of time because of traffic and road conditions. It is not convenient to study speed-distance relationship for a body moving with non-uniform speed. We use a term average speed. For example, if a car covers a distance of 100 km in 3 hours and 150 km in next 2 hours, then its average speed can be calculated as average speed is equals to total distance covered upon total time taken. देखिए एवरेज क्या होता है कि आपके जैसे व्हीकल्स मूव कर रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं बिकॉज वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो जैसे कि आपको दिया गया है कि कार है उसने 100 किलोमीटर कवर किया 3 आवर्स में एंड 150 किलोमीटर से नेक्स्ट 2 आवर्स में, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? जो आपका टोटल डिस्टेंस होगा. सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर प्लस 150 किलोमीटर. दिस इज द टोटल डिस्टेंस. एंड टोटल टाइम टेकन, पहले उसने टाइम लिया 3 आवर्स का, देन उसने टाइम लिया 2 आवर्स, राइट? अब डिस्टेंस आपका आ गया कितना? 250 किलोमीटर एंड टाइम हो गया आपका 5 आवर. और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज द एवरेज स्पीड. The numerical value of speed, just as of any other physical quantity, depends on the unit of measurement chosen.
Examples to illustrate speed. Example 1. Mr. Sharma covers a distance of 250 km with his car in 4 hours. Find the speed of the car assuming its motion to be uniform. देखिए मिस्टर शर्मा की जो कार है उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 250 किलोमीटर्स एंड टाइम लिया 4 आवर एंड यू हैव टू फाइंड आउट स्पीड. यू नो दैट स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम. सो डिस्टेंस इज 250 किलोमीटर अपॉन टाइम इज 4. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 62.5 किलोमीटर पर आवर. Next is example 2. The speed of a car is 60 meter per second. Calculate the distance covered by the car in 30 seconds. Okay, अब आपको speed given है, आपको time given है, you have to find out distance. तो distance आपका होता है देखिए speed into time. What is the speed? Speed is 60 meter per second and time है आपके पास 30 seconds. तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 3 18 and 2 zeros एंड आपका डिस्टेंस आ जाएगा 1800 मीटर. ओके, बाकी एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 की आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे. एग्जाम्पल 5. अ बॉय कवर्स 40 मीटर इन 10 सेकेंड, 35 मीटर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड 25 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय. यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय. तो सबसे पहले जो है डिस्टेंस जो आपको दिया गया है उसको आप प्लस करेंगे. राइट जब तीनों डिस्टेंस को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 मीटर. आपको एवरेज स्पीड निकालना है एंड टाइम हो जाएगा आपके पास 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड 20 सेकेंड प्लस 5 25 सेकेंड्स. और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर विल बी 4 मीटर पर सेकेंड. ये यानी कि ये उसका एवरेज स्पीड था. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. When an object covers equal distances in equal intervals of time along a straight line, the object is said to move in a uniform motion. In figure, a girl is covering equal distances in each second. Thus, we can say that the girl is covering equal distances in each second. Thus, we can say that the girl is cycling with a uniform motion. देखिए यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ओके, जैसे अगर इसमें देखें तो एक जो गर्ल है ना वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है हर सेकेंड में. एंड यूनिफॉर्म मोशन की एक बात हो रहा है कि हमेशा जो आपका ग्राफ होगा ना वो एकदम स्ट्रेट होगा. When an object does not cover equal distances in equal intervals of time along a straight line, the object is said to move in a non-uniform motion. In figure, the distances covered by the goal in equal interval of times are unequal. Thus, she is moving with a non-uniform motion. अब देखिए जब एक ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम along a straight line तो ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. जैसे कि देखिए जो डिस्टेंस कवर कर रही है गर्ल ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. और देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कभी भी जो आपकी लाइन है वो स्ट्रेट नहीं आएगी. Distance time graph. The motion of objects showing relationship between distance traveled and time taken to cover the distance can be represented in a diagram form by drawing their distance time graphs. The distance time graph is a line graph. A distance time graph shows how the distance traveled by a moving object changes with time. Graphs are generally plotted on a graph paper. तो देखिए जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का वो रिलेशनशिप शो करता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, और जिसको डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो ऐसे ग्राफ्स को कहा जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट ने और जो टाइम के साथ आपका चेंज हुआ है. तो जो ग्राफ्स हैं आपके जनरली यू नो दैट वो आपको प्लॉट करते हैं आप ग्राफ पेपर में. लेट अस लर्न टू मेक अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ लाइन ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डेटा. सो डेटा आपको गिवन है राइट जैसे कि देखिए टाइम आपका शुरू होता है 0 मिनट देन 1 मिनट 2 मिनट एंड डिस्टेंस आपको दिया गया है. तो ये किस तरह से आपको प्लॉट करना है. Draw two lines at right angles to each other on a graph paper. Mark the horizontal line as OX. It is known as x-axis. Similarly, mark the vertical line as OY. It is called y-axis. The point of intersection of OX and OY is known as the origin. O. देखिए this is your x-axis and this is your y-axis. And यहाँ पे जो आपके जो point है जहाँ पे दोनों intersect कर रहे हैं this is known as origin. Okay.
The quantity which is made to vary at its will is called the independent variable, and the other which varies as a result of this change is called the dependent variable. In this case, time is an independent quantity, so we show the time along the y-axis. We label the x-axis by writing time and its unit minute in bracket followed by an arrow. In other words, we write time minute along the x-axis. In this case, distance is a dependent quantity, so we show the distance along the y-axis. We label the y-axis by writing distance and its unit kilometer in bracket followed by an arrow. In other words, we write distance kilometer along the y-axis. अच्छा देखिए, अब x-axis में आपको time show करना है, time, and time आपका है in minutes, okay? And y-axis में आपको distance show करना है, and distance आपका किस में दिया गया है? देखिए, distance आपका किस में दिया गया है? Kilometer in kilometer. We should choose suitable scales so as to represent the large values of time and distance conveniently on the small graph paper. For the motion of the car, scales in this case should be time 1 minute is equals to 1 centimeter and distance 1 kilometer is equals to 1 centimeter. अब देखिए, अब अपने हिसाब से हम जो है distance आपका जो scales है हम उसको choose करेंगे. For example, ये आपका 0 है, 1 2 3 4, राइट, एंड इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4. अब देखिए आप कैसे प्लॉट करेंगे इसे. टाइम 0 एंड डिस्टेंस 0, तो दिस इज द पॉइंट, ओके. नाउ टाइम इज 1 minute एंड डिस्टेंस इज 1 kilometer. 1 minute and 1 kilometer, this point. Next, 2 minute and 2 kilometer. 2 minute, this is time, and का ये किलोमीटर. एंड देन इस तरह से आपके जो डॉट्स आएंगे आप उसे ज्वाइन कर देंगे. Mark values for the time and the distance on the respective axis according to the scale we have chosen. In this case, for the motion of the car, we mark the time 1 minute, 2 minute on the x-axis from the origin O. Similarly, we mark the distance 1 kilometer, 2 kilometer on the y-axis from the origin O. Observation recorded at serial number 1 in table shows that at time 0 minute the distance moved is also 0. The point corresponding to this set of values on the graph will therefore be the origin itself. After 1 minute, the car has moved a distance of 1 kilometer. Mark 1 point on the graph paper where the graph lines representing these two values meet. Similarly, mark in the graph paper the point as pencil dots corresponding to different sets of values. Join all the marked points with a pencil line. It is a straight line in this case. This is the distance type graph for the motion of the car. So जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी आप points को प्लॉट कर देंगे उसके बाद जो डॉट्स हैं आप उनको ज्वाइन करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी. तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये आपका क्या है? फॉर द मोशन ऑफ द कार. Notes for the chapter. If speed is same throughout a journey, then the motion is uniform. If speed varies, then the motion is non-uniform. Time measuring device, watch or clock. Motion of hands of clock is periodic. Motion of pendulum is periodic and oscillatory. To and fro. It is the time taken by a pendulum to complete one oscillation. Basic unit of time is second. Basic unit of speed is meter per second. Speed is measured by a speedometer. A line graph is used for distance time graph. Children, I hope आपको चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.